Good morning, students. I hope you all are fine and healthy and taking all necessary precautions to stay safe. Today, we are going to begin with our chapter 5 of GK, that is Indian Museums. So, basically, museum is a building in which objects of historical or scientific, artistic, cultural interest are stored and exhibited. We usually keep on visiting museums, and today we are going to identify these famous museums of India. So, this is your first museum, the picture of first museum that you can see. This museum was opened in 1982 and it is located in Bhopal. It has a tribal art gallery. Tribal art gallery means the things, the objects that are related to various tribes, which houses a large collection of terracotta figures, wall paintings, wood carving, and metal sculptures created by craftsmen in Bastar. And the name of this museum is Bharat Bhavan Museum. So I have written here. In the similar way, you will also write in your books. And this is the picture of second museum that is given in your book. Now I will read the explanation of this museum. This museum was officially renamed as Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya. चिल्ड्रन म्यूजियम्स को ही हिंदी में संग्रहालय बोला जाता है एंड इट इज़ द मेन म्यूजियम ऑफ मुंबई एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्कल्पचर्स एंड मिनिएचर पेंटिंग्स. Children, sculptures are the art of making figures by carving stones. Like जैसे पत्थरों को तराश कर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं ना, उन मूर्तियों को sculptures बोला जाता है. तो ये जो म्यूज़ियम है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्कल्पचर्स एंड मिनिएचर पेंटिंग्स एंड द नेम ऑफ दिस म्यूज़ियम इज़ द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम. In the similar way, you will also write in your books. The next picture is this, which you can see. This famous museum is located in Hyderabad and it has more than 40,000 objects that once belonged to the Nizam of Hyderabad between 1899 and 1949. And the name of this museum is Salarjung Museum. I repeat, Salarjung Museum. Now the next is this picture that is given in your book. Kindly you write the spellings of Salarjung Museum in your books as well. Help box is also given. You can even check your spellings from there as well. The next is this picture that is given in your book, also known as the National Museum of India. It is one of the largest museums in India. Established in 1949, it holds a variety of articles ranging from prehistoric era to modern works of art. मतलब 1949 में ये म्यूज़ियम बना था और इसमें जो आर्टिकल्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं, they are from prehistoric era to modern works of art, and it functions under the Ministry of Culture, Government of India, and the name of this museum is the National Museum. Now coming to the next page, this is the picture number 5 that is given in your books. This museum is also known as the National Museum of Mankind. It is located on the Shimla Hills in Bhopal. Sorry, not Shimla, but Shamla Hills. This museum was established in 1947. ये वाला म्यूज़ियम जो कि शामला हिल्स भोपाल में है, ये 1947 में बना था and it is spread over 40 hectares and has authentic replicas of Indian tribal dwellings built by the tribal people themselves. Authentic means genuine, original. Copies, replicas means the copies of Indian tribal dwellings. Dwellings means the residents.
उनके जो घर थे वहाँ के ओरिजिनल जो कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, चीज़ों की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो इस म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं. एंड इट वाज बिल्ट बाय द ट्राइबल पीपल देमसेल्व्स. एंड द नेम ऑफ दिस म्यूज़ियम इज़ राष्ट्रीय मानव संग्रहालय म्यूज़ियम. The next picture is this. This is number 6 picture that is given in your book. This museum was formerly known as the Law Building. It houses an outstanding collection of artifacts from the French colonial period and an earlier version of the rickshaws. Pussy Pussy. And artifacts means objects made by humans typically of cultural और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट. मतलब इस म्यूज़ियम में जो चीज़ें पड़ी हैं दे आर मेड बाय ह्यूमंस especially for the cultural and historical interest, and it is these objects are from the फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड. मतलब फ्रेंच ने जब रूल किया था उस टाइम के ऑब्जेक्ट्स जो पड़े हुए हैं इस म्यूज़ियम में. एंड द नेम ऑफ दिस म्यूज़ियम इज़ the Puducherry Museum. Now let us read the did you know fact. Since 1941, Van Gogh's best work, The Starry Night, this is a painting, has been hung in the Museum of Modern Art, New York. New York Museum में जो वैन गॉग का बेस्ट पेंटिंग है द स्टारी नाइट, वो न्यूयॉर्क के म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट इसमें लगी हुई है सिंस 1941. Now, why? The Egyptians mummified the dead. The Egyptians mummies. बच्चे mummies जो हैं they are basically body of human beings or animals that has been ceremonially preserved by removal of internal organs, treatment with natron and resin, and wrapping in bandages. मतलब dead bodies को के अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स निकाल के उसको ऊपर केमिकल्स वगैरह लगाकर फिर उसके बाद उसके ऊपर उसको बैंडेज से कवर करके जो डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं उनको ममीज़ बोला जाता है. अब जो इजिप्ट में लोग काफ़ी ज़्यादा ममीज़ को प्रिजर्व करते हैं, क्यों किया जाता है? लेट अस रीड आउट. द इजिप्शियंस बिलीव दैट द डेड नीडेड देयर बॉडीज़ फॉर द ट्रिप टू आफ्टर लाइफ. इजिप्शियंस का मानना है कि जो लोग मर जाते हैं उनको मरने के बाद भी अपनी हम लोग तो डेड बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, रादर बर्न कर देते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, फिर उसको जल परवाह कर देते हैं जो बोन्स वगैरह हैं. लेकिन इजिप्शियंस का मानना है कि डेड ह्यूमन बींग्स को डेड बॉडीज़ की ज़रूरत होती है इवन मरने के बाद भी. सो दे केयरफुली प्रिपेयर द बॉडीज़ फॉर द जर्नी. इसलिए वो जो डेड बॉडीज़ हैं उनको केयरफुली प्रिपेयर करते हैं ताकि वो आफ्टर लाइफ जर्नी अपनी कंटिन्यू कर सकें. दे प्लेस द बॉडी ऑर्गन्स इन स्पेशल जार्स, और जो बॉडी ऑर्गन्स निकाले जाते हैं वो स्पेशल जार्स में रखे जाते हैं. नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग, दैट इज़ नाउ फाइंड आउट where is the National Handicrafts and Handloom Museum situated? It is situated in New Delhi. And where is the Watson Museum situated in India? It is situated in Rajkot. Children, please complete this page of this chapter of your GK in your books only. Thank you so much for watching this video.